Hello guys, my name is Mayuresh and in this particular video we're going to discuss about stock market, business, finance related news. So let's get started. So I noted down some of the news and we are going to discuss each and every news. Also we'll discuss some of the things about this particular news. So let's get started without further ado. First of all, the resources of this particular news are Live Mint and Economic Times and Business Standard. These are the three newspaper I genuinely like and I recommend you to people to read this particular newspaper because they are really great. So first of all, in the Live Mint there was one article which was about national employment policy, which I personally think we need to discuss. Okay, so first of all, that article was about government is going to come up with the national employment policy. In that, government is going to create a kind of roadmap for to reduce the unemployment in different sectors. Many of the economists also say that government should focus on economy. If the economy gets better, obviously the unemployment will go down. Because if economy get better, more and more businesses will come, more and more foreign investments will come into country. As a result of which, the unemployment will definitely go down. And definitely government is focusing on the economy because not lots of PLI scheme has already been launched by the government, which are a positive sign for the economy of the country. At the same time, India has become the go-to in destination for many of the foreign investors. Definitely on that front, we are not losing. At the same time, India in the next 10 years will be one of the manufacturing hub. That's for sure. India's manufacturing has increased a lot, and manufacturing is one of the sector where unemployment is 41%. Other than that, many of the other sectors have unemployment, but manufacturing has the largest amount of unemployment. So over the years, unemployment will definitely go down, and this kind of policies will definitely boost this particular thing. The one thing which I want to tell you is that unemployment rates which are given is they are not true unemployment rates. Now why I am saying this? So unemployment rates, how they are calculated? Basically they are calculated basically they calculate the person who is willing. So for example, I am the person who is kind of willing to get the job, who I am the person who is applying on different places to get the job. Those people are only included in the unemployment. The people who might be kind of preparing for government exam, they are unemployed, but they will not be considered into this. At the same time, many of the adults who are trying to get many of the adults who are basically just doing the education, because of which they are not getting the job, they are not aspiring to get the job, they will also be not included into this particular list. Many of the women's, urban and rural area women's, these are unemployed, are not kind of contributing towards the economy. Many of these women will also not be included because they are not willing. So only those people who are willing to get the job, those are applying to get the job, are only included into the unemployment list. This is something which I personally feel is not the right thing, because in country unemployment is way far more than what it is shown in the unemployment rates. So we need to genuinely work on the unemployment, which definitely things are getting better, and over the years it will definitely happen. The only thing is that at what rate the things will improve. We are definitely improving, but at what rate? That is something which is really important. Many people say India will be this much, India will be this much, and because of the young population, everything, Indian economy will go this much and everything like that, India will be developed. Definitely it will develop, because इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन, डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई अच्छा करके निकलेगा. चीज़ ऐसी है, कितने लोग निकलेंगे? Are we going to get 2x up or 4x up, 5x up or 10x up? This all depends on the different policies by the government. This all depends on how our education system molds. This all depends on the youth of the country. Let's keep this talk aside and let's move to the next news. The next news is from the Byjus. Byjus has already acquired $2.5 billion. Acquisition has already been done this year, and these are all the edtech startup companies, like from many of the Indian edtech companies, many of the like Akash and GradeUp and many of the other companies. Along with that, many of the edtech companies or edtech startups of USA has also been acquired by Byjus. So they are kind of really expanding. These companies has become really big now. The valuation, I guess, $16 billion or 17 billion this company has, and now they have raised the fund of $1.2 billion for the more acquisition. So this particular company is doing a lot more acquisition. Byjus काफी ज़्यादा acquisitions कर रहा है, and they're expanding. Next year they are also going to come up with their IPO. I personally do not like this particular company because of their morals, because of the way they try to sell their particular products and the kind of work environment. I personally do not like this particular company, but this is the reality. They are kind of acquiring a lot more companies. Next news is about the Google. Google has reached $2 trillion market cap, and it has become only the third company after Microsoft and Apple to reach $2 trillion market cap. So definitely a great news. बहुत बड़ी कंपनी है, हमें मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. So basically the Google ad business has gone up and the Google cloud business has gone up, as a result of which the revenue has increased really well, and the stock has performed positively. The market has responded positively. I guess on Monday it has gone up by 1.2%, और इतनी बड़ी कंपनी 1.2%, तो
ठीक ठाक बढ़ा है. Okay, from the companies like Google you expect basically a stable returns. You do not expect कि 10% एक दिन में बढ़ जाएगा. This is not something which is going to happen. You get a stable returns. That is something which is really important, and that is something which is a positive in companies like Google. Along with that, अगर आपको Google, Microsoft and Apple जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, you can download the Grow application. I personally use Grow application for my long-term investment because I really like the UI and it's really a great application for the person who is starting his investment, or for the person who want to invest in the international stock. Grow application is the go-to application. Download from the link in the description. You will get ₹100 bonus. If you download from the Play Store, you will not get that ₹100 bonus. The next news is basically T+1 settlement. So T+1 settlement. What is T+1 settlement? So first of all, today we follow T+2 settlement. So for example, today I purchased the stock. It will come into my Demat account after 2 days. So T+1 settlement, what it is in the stock will be delivered in my Demat account in just 1 day. So because of which the delivery get a bit fast, which is really great. So this is something which is going to be applied. First, this T+1 settlement will be applied to the low market cap companies, and then फिर धीरे धीरे they will apply to different big market cap companies as well. This is the really great move. T+1 एक टाइम आ जाएगा फ्यूचर में, जब एक ही दिन के अंदर ही स्टॉक बेसिकली आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा. द वे द टेक इज मूविंग और वे दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज वर्किंग, फिनटेक इज वन ऑफ द फ्यूचर. और फ्यूचर में ये फिनटेक और ये सब जो चीज़ें हो रही है फाइनेंस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी. अगर आप देखो, यू कैन लिटरली ओपन द अकाउंट एट योर होम. दिस इज समथिंग विच इज अ ग्रेट फैसिलिटी. तो ओवर द ईयर्स ये पर्टिकुलर चीज़ें ऊपर ही जाने वाली है. द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट अमेजॉन. और कमेंट डाउन बिलो हाउ मेनी पीपल ऑफ यू हैज़ यूज्ड अमेजॉन पे. आई पर्सनली यूज अमेजॉन पे. तो आप बोलोगे अमेजॉन पे क्यों यूज़ कर रहा है भाई, इधर फोन पे है, गूगल पे, व्हाई यू आर यूजिंग अमेजॉन पे. द मेन रीजन इज व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द अमेजॉन, आई एम अ बिग फैन ऑफ अमेजॉन, आई एम अ बिग कस्टमर ऑफ अमेजॉन. बहुत सारी चीज़ें मैं अमेजॉन से मंगाता हूँ. सो व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द अमेजॉन पे, आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड्स, एंड दिस इज अ ग्रेट वे टू एक्वायर द कस्टमर. सर्टेनली फोन पे और गूगल पे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते. पहले उन्होंने दिए थे, बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमेजॉन पे एंड गूगल पे, गूगल पे एंड फोन पे. बट जब अमेजॉन पे स्टार्टिंग में आया, आई स्टार्टेड गेटिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम अमेजॉन पे. स्टिल आई गेट टुडे as well. It has been 4 to 5 months I've been using the Amazon Pay, but today as well I get the reward from Amazon Pay. So I personally like it. It's really great. At the same time, if you just look at the UPI ID, it's also kind of easy to remember, and that's why I give that UPI ID in many of the places. Like the UPI ID is basically your number at the rate APL. This is so easy as compared to the phone pay UPI ID or Google Pay UPI ID. As a result of which याद भी रह जाती है, and I just give that. Okay, it might be a lame reason, but it is a kind of a reason as a result of which मैंने बहुत सारी जगह पे मेरी वही UPI ID देखी रखी है फॉर पेमेंट ऑन डिफरेंट अदर फॉर डिफरेंट अदर वर्क. सो दैट्स व्हाई आई पर्टिकुलर चूज Amazon Pay over phone pay and Google Pay. And the news related to Amazon Pay is that Amazon is going to invest ₹1,000 crore into Amazon Pay to expand the Amazon Pay business. The next news is about India's biggest IPO, Paytm IPO. Paytm को कौन नहीं जानता, and they have launched the IPO. इंडिया का सबसे बड़ा IPO इस तरीके से भी एडवर्टाइज हुआ है पर्टिकुलर IPO, बट सर्टेनली दिस IPO हैज़ नॉट बिन दैट मच हाइप्ड. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ज़्यादा कुछ इतना सब्सक्राइब नहीं हुआ है. एट द सेम टाइम जो QIB कैटेगरी उसमें भी ज़्यादा कुछ सब्सक्राइब नहीं हुआ है. इट इज़ जस्ट सब्सक्राइब बाय 1.23 टाइम्स बाय रिटेल इन्वेस्टर्स. सो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई. इफ यू जस्ट सी द 2 days परफॉर्मेंस ऑफ नायका वो सब्सक्राइब 6 times इन 2 day, और तीसरे दिन तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 91 times सब्सक्राइब हो गया था. बट दिस पर्टिकुलर Paytm IPO की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई सर्टेनली मार्केट में. काफ़ी बड़ा IPO भी है और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं हुई है मार्केट में. सो लेट्स सी किस तरीके से चाहता है. आई पर्सनली थिंक इसमें आपको लिस्टिंग गेन शायद नहीं मिलेंगे. दिस IPO माइट गिव इवन लॉसेस रेदर देन गेन्स. एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा. सो डोंट एक्सपेक्ट मच. समवन इज गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर IPO फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डोंट अप्लाई इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टिंग गेन्स तो शायद ही मिलेंगे इस पर्टिकुलर IPO में. एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए IPO नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनी is not a profit making company. Second is lot more competition in the market, and third thing is they're in a lot more business. And I personally think rather than going for different business like Paytm insurance, Paytm money, Paytm different other kind of their apps, I will go to the specific app, and that is something which many of the Indians also think. Paytm को as a wallet they will definitely prefer, but for the other businesses people might not prefer. People might prefer the specific app. Like for the investment I will prefer Zerodha or Grow rather than going for the Paytm brokerage services.
तो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग विच आई पर्सनली थिंक माइट नॉट वर्क. आई विल वेट एंड आई विल सी किस तरीके से वो ब्रांडिंग कर रहे, किस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग कर रहे, और किस तरीके से अगर वो लोग बेसिकली अपने आप को प्रूव कर पा रहे अलग अलग मार्केट्स में. एंड इफ दे आर एबल टू डू दैट, देन आई विल अप्लाई फॉर द लॉन्ग टर्म. बट फॉर नाउ आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इन द IPO. एट द सेम टाइम आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि IPO में लिस्टिंग गेंस के चांसेस नहीं है. बट देयर वॉज अ लॉट मोर चांसेस फॉर द लिस्टिंग गेंस इन द Nykaa IPO. सर्टेनली मुझे नहीं मिला. आई अप्लाइड फॉर इट, बट मुझे ये पर्टिकुलर IPO नहीं मिला. 91 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था यार, तो चांसेस ऑफ मेनी ऑफ द पीपल गेटिंग दिस IPO वॉज वेरी मच लेस. जिन्हें मिला यार बहुत ज़्यादा मुबारक, बिकॉज दिस अ रियली ग्रेट. बिकॉज नाउ जब ये लिस्ट होने वाला है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस विल लिस्ट एट 70% प्रीमियम. तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको काइंड ऑफ गेन मिल सकता है. सो इट्स अ रियली ग्रेट थिंग. सो पीपल, कांग्रेट्स टू ऑल दोज पीपल हु गॉट दिस IPO. सर्टेनली आई वॉज नॉट द वन. क्रिप्टो ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द क्रिप्टो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और $3 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप हो चुकी है. $3 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के आसपास है, और अभी एक क्रिप्टो की मार्केट कैप ही, और मतलब ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट कैप $3 ट्रिलियन की हो चुकी है. सो इट्स अ बिग मार्केट कैप. द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट ऑटोमोबाइल का सेक्टर को इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, रिकॉर्ड फ़ायदा हुआ. अगर आप ये फेस्टिवल सीजन देखो, दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन वॉज द सीजन विच ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स. बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिजनेसेस को, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर को इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड इतनी नहीं आई, बिकॉज द रीज़न इज़ कुछ उन्होंने बेसिकली डिस्काउंट सब चीज़ें दिए नहीं थे, एंड दे कांट गिव द डिस्काउंट बिकॉज द रीज़न इज़ दे डू नॉट हैव द रॉ मटेरियल. तो दे आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर दैट मेनी ऑफ द व्हीकल्स. एज अ रिजल्ट ऑफ इच दे डिड नॉट गिव दैट मेनी ऑफ द डिस्काउंट्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इच इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. बट इस पर्टिकुलर बिजनेस में अगर कोई कंपनी स्टैंड आउट हुई है तो वो टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, एंड इट हैज़ परफॉर्म वे बेटर दैन मेनी ऑफ इट्स कंपिटिटर. और नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा मोटर्स के ऊपर ही है कि टाटा मोटर्स इज गोइंग टू कोलैब विद BOI विच इज़ बैंक ऑफ इंडिया फॉर गिविंग लोन्स. टाटा मोटर्स से कार खरीदेंगे, दे कैन ऑल्सो टेक द लोन. Okay, BOI basically Bank of India will kind of look around their finances, will give them the loans and all this at a low interest rate. Rates starts from 6.85%, and then they will increase according to model and different other things. Okay, so this is something you need to keep in mind. So if you are someone who's going to purchase a Tata Motors, you can definitely inquire about this in the showroom. At the same time, Bank of India will cover 90% of the finances of that particular car. So if you are someone who is thinking to purchase the car, you can definitely go for this facility. मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगता है कोई लोन लेके कार को खरीद रहा है, बिकॉज आई पर्सनली थिंक कार इज अ लग्जरी, एंड मेनी ऑफ द पीपल हु कांट अफोर्ड द कार, दे शुड डेफिनेटली शुड नॉट गो फॉर द कार. इफ यू आर एबल टू अफोर्ड इट, देन ओनली यू शुड गो. लोन लेके कार खरीदना, इट डू नॉट मेक सेंस. एट द सेम टाइम देयर आर लॉट मेनी सिटीज़, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है कि यू कैन लिटरली रेंट द कार फॉर 1 ईयर. सो आई थिंक दैट फैसिलिटी इज़ रियली ग्रेट. और अगर आप अभी डीजल और पेट्रोल की कार खरीद रहे हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा फास्ट बिल्ड हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, एट दैट टाइम यू माइट नॉट बी एबल टू गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो मुझे पर्सनली लगता है 2-3 साल के लिए आप कार को रेंट करते रहो. कार रेंटिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग, एंड देन यू गो एंड परचेज द कार इन द फ्यूचर, और माइट बी इलेक्ट्रिक व्हीकल. बट जो लोग लोन लेके कार खरीद रहे, इट डू नॉट मेक सेंस टू मी. द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नोटबंदी. टेंशन मतलब नोटबंदी नहीं हो रही है, बेसिकली नोटबंदी को हो गए 5 साल. 5 years हैज़ बिन कम्प्लीटेड. भाइयों और बहनों, नवंबर 8 को मोदी जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों नोटबंदी होने वाली है, 500 और 1000 की नोट बैन हो जाएगी. इसके बाद कितने महीने लोगों ने स्ट्रगल किया, सब चीज़ें हुई, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट. तो 5 साल हो चुके. 2016 में चीज़ हुई थी, एंड बेसिकली मेन एक चीज़ इसलिए भी की गई थी क्योंकि फेक करेंसी है जो सर्कुलेशन में वो निकाल सकते हैं. एट द सेम टाइम ब्लैक मनी निकल सकता है. आई डो नॉट थिंक ये चीज़ें काइंड ऑफ किस तरीके से अचीव हुई है उसके बारे में मुझे नहीं बात करनी. एक चीज़ जो इससे अचीव हुई है वो है कैशलेस इकोनॉमी इंडिया में. उसके बाद UPI लॉन्च हुआ, विच इज़ अ रियली ग्रेट मूव, बिकॉज ऑफ विच मेनी ऑफ द पीपल आर टुडे यूजिंग द UPI. मेनी ऑफ द पीपल आर डूइंग द ऑनलाइन पेमेंट, विच इज़ अ रियली ग्रेट. सो दिस थिंग हैज़ हैपन. कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम मूव हो गए, विच वॉज रियली इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग विच आई वुड से इज़ अ रियली ग्रेट थिंग. ब्लैक मनी के बारे में तो चीज़ नहीं बता, बट यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि 5 साल हो गए, बट फेक करेंसी हैज़ नॉट गॉन आउट ऑफ द सर्कुलेशन. एंड बेसिकली फेक करेंसी 2020 के बाद 190% इंक्रीज हो चुकी है. सो इट्स डेफिनेटली अ थिंग ऑफ कंसर्न कि फेक करेंसी तो यार ज़्यादा बढ़ गई ऊपर से घटने की जगह. सो देयर इज़ अ ₹70 करोड़ फेक करेंसी इन द सर्कुलेशन टुडे. सो आप भी ध्यान रखना, कहीं आपकी एक नोट होगी 2000 में से जो फेक करेंसी होगी. एंड 2000 की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द करेंसी फेक करेंसी इज इन द डिनोमिनेशन ऑफ 2000. सो लास्ट एंड द फाइनल न्यूज़ इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक
व्हीकल सेक्टर. सो यार इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर इज़ मूविंग रियली फास्ट और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा फास्ट बिल्ड हो रहा है. रिसेंटली देयर इज़ वन अपडेट इज़ दैट 22,000 पेट्रोल पंप्स will have the facility of electric vehicle charging in the next 2 to 3 years, which is a really great. So 10,000 petrol pump of Indian Oil Corporation will have the electric vehicle charging facility. At the same time, the 5,000 petrol pump of BPCL will have electric vehicle charging facility, and many of the Reliance petrol pump will also have the electric vehicle charging facility. So this is a really great move, and definitely infrastructure काफ़ी ज़्यादा फास्ट बिल्ड हो रहा है. एंड आप लोग बहुत लोग अभी कह रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज समथिंग विच इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल एंड एनीथिंग लाइक दैट, बट आप देखोगे अगले 3 से 4 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल इस तरीके से बूम हो सकता है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई बिलीव इन वन ऑफ द स्टॉक जिसमें मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ इज़ द टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा सही जाएगा क्योंकि दे हैव अ रियली ग्रेट हेड स्टार्ट इन टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर. एंड ओवर द ईयर्स अगर डिमांड बढ़ेगी एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर एंड मोर प्रोडक्शन विल टेक प्लेस. सो ज़्यादा प्रोडक्शन बल्क में जब प्रोडक्शन होगा कार्स का, इलेक्ट्रिकल कार्स का, तो कॉस्ट डेफिनेटली नीचे चले जाएगा. और जब बेसिकली कार जो नॉर्मल कार है वो 4 लाख 5 लाख में अवेलेबल हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल, पीपल विल गो फॉर दैट कार फॉर द एनवायरमेंट. एट द सेम टाइम उन्हें सस्ती पड़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है. एट द सेम टाइम द पेट्रोल का और इस सब का कॉस्ट भी कम होता है. इलेक्ट्रिक चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये पर्टिकुलर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इज समथिंग विच इज़ अ सर्विस. एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर आपको भी आज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोलना है, यू कैन डेफिनेटली ओपन इट. आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ ऑल्सो रियली ग्रेट. एज अ रिजल्ट ऑफ विच इससे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आ सकते हैं. इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.